Welcome, friends. My name is Avinash and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face-to-Face series. Friends, in these episodes, we introduce to you emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters of such companies so that we can understand, their company's operations in a much better way. We talk to them about their company's business model, their growth journey, and their future growth plans. And in this process, we get a lot of valuable information from the promoters. And today, friends, we have got a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Storage Technologies and Automation Limited, and we have the privilege and pleasure of having, Mr. Afzal Hussain, who's the whole-time director and CEO of the company. Afzal ji, thanks a lot for sparing your valuable time with us today. I'm quite sure that in this small interaction, we'll be able to understand your company's operations in a much better manner. Thank you, Avinash ji. Thank you so much. Thank you for hosting us on your channel. Yeah. Indeed, a pleasure to be with you. Yeah. Thank you. Yeah. And to all your viewers, I don't know what time of the day they would be watching or in the night. Whatever it is, good morning, good afternoon, good evening. Yeah. So, Afzal ji, pehla sawal, which is very basic and elementary. If you could tell us, what is the business model of our company? Hamara main product line kya hai? Or what is the positioning of our company in the domestic market? And one more question which I would like to add, to this is that if you could tell us something about the business journey about this company, how did this company start? ये company कैसे शुरुआत हुई? इसके जानने के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताइए. That will really be start. So I will start first with the journey, the last part of your question. Okay, and then I'll just come forward. Okay, the journey starts with our chairman Hanif Bhai. Okay, because whole and soul, he's the most important person in this organization. So Hanif Bhai, after his engineering, briefly was doing some business here in India, and he got an opportunity to go abroad. So he was working in Saudi Arabia. While working for a Saudi Arabian company in a storage and warehousing space, he also got a chance to go visit Europe, learn more about the latest trending products and solutions that the Europeans were offering back then. With that starts the vision for creating new products from that learning. And then after that, Hanif very soon after this, he left the business, he left the job, and he started operating individually in the Middle East market, where he would then slowly source products from India and do execute projects in the Middle East. And that journey of slowly procuring one product, one component, two component, तीन ऐसे बढ़ते गए, and then eventually a complete system manufacturer हम बन गए थे. So the journey starts with Hanif Bhai and his passion that drove him to say that okay fine, मैंने X सीख लिया, अभी X को X square करते हैं. वहां से वो journey start होती है. And then we established this company in 2010. Okay, as a system manufacturer, we started with छोटा turnover कर रहे थे और primarily हम focus कर रहे थे Middle East and North and East Africa. That was the primary markets we were focused back then. And then slowly हमने जो है नाम रैक्स एंड रोलर्स जो है, जो हाँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो देख रहे होंगे दे वुड नो अस एज रैक्स एंड रोलर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन तो ये कंपनी का नाम हो गया, लेकिन मार्केट में जो हमको जानते हैं, पहचानते हैं या आइडेंटिटी भी है, वो है रैक्स एंड रोलर्स. इट्स द ब्रांड नेम विथ विच वी ट्रेड इन द मार्केट. सो फिर वो एस्टेब्लिश किया. एंड देन स्लोली इससे क्या हुआ कि डोमेस्टिक मार्केट में भी हमारा फर्स्ट एनकाउंटर इज very interesting. We were only exporting. हमारे containers load हो रहे थे. We were doing a project, a major project, almost close to about $1 million का project we were doing in Egypt. तो हमारे 2-3 container load हो रहे थे. तो what my neighbor जो था ना वो because we are in Bangalore, अगरबत्ती वाले थे. तो वहां पे कोई आया तो उन्होंने देखा ये कौन है जो इतने बड़े कंटेनर्स खड़े हुए हैं जो जा रहे हैं. उन्होंने बोला कि ये रैक्स बनाते हैं और ये बहुत बड़े काम करते हैं. तो उसने बस बोला कि चलो मुझे लेके चलो, मुझे रैक्स चाहिए. तो ही वुडंट टेक नो फॉर एन आंसर. सो उसने बोला नहीं, आप जो फॉरेन में रैक्स बनाते हैं ना वो हमें बना के दीजिए, हम ना नहीं लेंगे. आप देखिए हम आपके नेबर हमारे बहुत पुराने और बहुत अजीज दोस्त हैं. यू विल हैव टू डू दिस फॉर मी. ही
he insisted that we do business, and that starts our first business in India, where we did it for an agarbatti manufacturer in Bangalore. Okay, and then thereafter we said that चलिए हिंदुस्तान में भी बहुत business का opportunity है, and rightly done कि जो हमने तब किया ना, it made more benefit for us कि इंडिया का मार्केट तब ग्रो हो रहा था, we entered it at the right time, and then we have substantial amount of market share now over period of time. So this is a short journey of how it happened, Okay. and how Hanif's vision and how India market happened for us. And आपने आपने दूसरा मुझे पूछा था हमारा कि product. बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए. Yes. So yes, we are manufacturers of racking system. Okay. हम all type of warehouse के लिए जो racks आएंगे, mezzanine आएंगे, और various infrastructure that is required within the warehouse, we help customers identify the right product and then facilitate that by engineering it, manufacturing it, and commissioning it. Okay. तो अगर मैं एक बहुत आसान सा एग्जांपल ले लूं अमेजोन का, तो अगर अमेजोन का वेयरहाउस है, तो उनका माल जब से आता है जब तक छोड़ता है, उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रैक्स, मेजनाइन ऑपरेशंस के लिए, वो सारा हम मैन्युफैक्चर करते हैं. ओके, मैंने आई थिंक समझ गया. आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया अफजल भाई. अभी बताइए कि ओवरऑल मार्केट साइज जो रैक्स का है, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, व्हाट जी कुड बी जी. द टोटल एड्रेसेबल मार्केट, अफजल जी, ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years? नाउ इंडिया इज ग्रोइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ Yes. रहा है, लॉजिस्टिक्स इज आल्सो अ वेरी बिग काइंड ऑफ सेक्टर, so obviously we are all connected to logistics as well as as you rightly said, e-commerce players. So in your assessment, अगले 3-5 साल में what is the kind of growth opportunity which we visualize for the overall market size to grow, और उसमें हमारी कंपनी कैसे कैपिटलाइज करेगी? Okay. अगर मैं आपको मार्केट साइज बताऊं, वर्ल्ड ओवर मार्केट एज ऑफ 2023 was close to about 12.5 billion US dollars. Okay, and it is growing at a compounded annual rate of about 9 to 10% year on year, of which, okay, India is only contributing to 4.4% of the this thing. So आप मान के चले 550 मिलियन का जो है इंडिया का कंट्रीब्यूशन है उसमें, यूएस डॉलर्स, स्पीकिंग कोटिंग यूएस डॉलर्स. तो which is also growing at about 9.5% CAGR. और in the coming time the world तो grow हो रहा है, वो हो रहा है, हिंदुस्तान is going to grow at a much faster pace. आप देख रहे हैं जो गति नीति आ रही है, जो लॉजिस्टिक्स के लिए जो प्रोग्राम्स बन रहे हैं, इट शुड ओनली फैसिलिटेट मोर पीपल टू इन्वेस्ट इन दिस डोमेन, be it people who are part of it or people from outside who want to become part of this. Okay, so ये बढ़ने वाला है. So even nevertheless we are estimating an 10% CAGR. Okay. Okay, it is still a very big market, and India is going to get bigger. So India's share of 4.4 has to become close to about more than that, close to about 7 to 8% हो जाएगा over the next 3 years. Okay. So this is the market. Okay, so understood. अफजल जी, अभी एक बात बताइए, what is the kind of, which are the kind of marquee customers we cater to? Because you said Amazon, अभी आपने Amazon की बात की, तो मुझे जी. बताइए जो आपके की एंकर मार्की कस्टमर्स है, इनमें से कौन कौन से हाँ. नाम आप हमको शेयर कर सकते हैं? और इसमें मेरे को एक बात बताइए, अभी प्रोडक्ट के बारे में एक छोटा सा सवाल है कि जो आपके प्रेजेंटेशन में भी मैंने देखा था कि आपके कितने एसक्यूज है, कितने तरीके की रैक्स आप बनाते हो, और टिपिकली कौन से सेक्टर्स को ज्यादातर हमारा माल जाता है? व्हिच सेक्टर्स, लाइक मैन्युफैक्चरिंग तो होगा ही, बट विद इन मैन्युफैक्चरिंग व्हिच आर द सेक्टर्स वेयर यू कैटर टू द मैक्सिमम डिमांड? इफ यू कुड शेयर योर थॉट्स. So मैं आई जस्ट कम टू कस्टमर्स फर्स्ट. सो कस्टमर्स में आप अगर आप देखेंगे तो बिग पीपल लाइक फॉर्च्यून 500 कंपनीज, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं हु डील विद प्रोडक्ट्स, ओके, ये सारे हमारे क्लाइंटेल होंगे. आप अगर मैं बताऊं, रिलायंस, अदानी है, अदानी वे है, उनके बहुत सारे डिविजन्स हैं जिसमें वो प्रोडक्ट्स भी डील करते हैं, जैसे विलमार हो गया, अदर्स एंड ऑल. सो रिलायंस, अदानी हो गया, आपका आदित्य बिरला ग्रुप है, बजाज है, फिर यूनिलीवर, आईटीसी, ओके, डाबर है. तो ऑल दीज आर आवर क्लाइंटेल, एंड एवरीवन फॉर अस इज मार्केट कस्टमर्स. कोई भी ऐसे वीक कस्टमर नहीं है, एवरीवन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. भले उनका छोटा रिक्वायरमेंट हो या बड़ा रिक्वायरमेंट हो, इट हैज टू बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड इट हैज टू बी डन विद अ लॉट ऑफ जस्टिस.
Exactly. So for me, छोटे से छोटा बंदा to big, everyone is very important and they're all marquee. So केवल बड़े नाम बोलने के लिए तो बहुत है, बाकी छोटे भी बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा, और मेरा बोलने से भी people may not able to identify. We have helped them increase their warehousing capacity, where we have helped them increase their cost, that reduce the cost that they were incurring in warehousing, increase their agronomics. So Yeah. yeah, everything we help them there. So And coming to the second part of question was बेसिकली विच सेक्टर, segment. कौन से सेक्टर्स पे Segment. ज्यादा हम डिमांड को केटर करते हैं, यानी विद इन मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत सारे सेक्टर्स है, तो विच आर द सेक्टर्स वेयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर गोइंग, लाइक ई कॉमर्स होगा, उसके बाद कोई मैन्युफैक्चरिंग होगा, केमिकल्स होगा, इफ यू कुड जस्ट गिव अस सम सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ द ओवरऑल कस्टमर मिक्स. सो FMCG would be, FMCG है आपका, ई कॉमर्स और फैशन, दिस वुड बी द हाईएस्ट. फिर आपका केमिकल्स है, ऑयल एंड गैस. फिर आपका फार्मास्यूटिकल्स, कोल्ड स्टोरेजेस, F&B, ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस आ गया. ऑल्सो एजुकेशन इंडस्ट्रीज, ऑल्सो एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, ये सारे हमारे क्लाइंटेल हैं. ठीक है. आई थिंक अच्छी तरह से समझाया आपने अफजल जी. अभी मेरे को बताइए, सी आई वाज आल्सो रीडिंग दैट आप थोड़ा सा ऑटोमेशन भी अपने बिजनेस में करते हैं. तो सर व्हाट इज द पोर्शन ऑफ ऑटोमेशन वर्क इन द ओवरऑल टॉप लाइन ऑफ द कंपनी? मोटा मोटी सर कितना परसेंटेज होगा? बिकॉज ये भी एक बहुत ग्रोइंग सेगमेंट है जो मेरे ख्याल से कंपनी करती है, तो इसके बारे में जरा जरा बताइए. Okay, automation is an integral part of the process. Okay, कि automation starts not with any hardware or anything. हम हमेशा कहते हैं कि automation is process, कि कोई भी चीज को सही तरीके से एक प्रोसीजरली करना, उसको हम ऑटोमेशन कहते हैं. सेकेंड, ऑटोमेशन फैसिलिटेटेड विद एन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, सो वेयरहाउस में एक चीज रिपीटेड हो रहा है, उसी को आप ऑटोमेट करते हैं पहले प्रोसेस से कि भाई ये कीजिएगा, एंड सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक सॉफ्टवेयर जो कहेगा ये कीजिए, और एक हार्डवेयर जो करेगा. सो इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस. वी टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ ऑटोमेशन. ऑल्सो वी पार्टनर विथ अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन पार्टनर्स टू डू बिजनेस. सो क्योंकि क्या होता है ऑटोमेशन में, एवरीवन कैन नॉट डू ऑल टाइप ऑफ ऑटोमेशंस. There are some automations that we manufacture ourselves. There are some automation we partner with others. So ये कुल मिला के you are addressing the automation needs. अंडरस्टूड. तो अफजल जी, अभी लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन आवर इंडस्ट्री. आई मीन हर इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है, लेकिन कैन वी एज्यूम दैट वंस यू गेट अ कस्टमर, वो टिपिकली आपका सर्विस, आपकी डिलीवरी, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देख के आप ही से बिजनेस करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हमारी इंडस्ट्री में कितना, क्या बहुत ज्यादा प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में, या सिलेक्टेड पॉकेट्स में रीजन वाइज कंपनीज काम करती है? पहला सवाल तो वो है. और दूसरा सवाल, हाउ डू वी डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स विद द कंपटीशन, कि हमारी सर्विस क्वालिटी अच्छी है, हमारा एग्जीक्यूशन अच्छा है, हमारी डिजाइनिंग एबिलिटी अच्छी है, तो फाइनेंशियल नंबर्स तो सबको पता है, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव असेसमेंट सर, दो तीन पॉइंट जो आप हमको शेयर करें, जिससे हमको आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी मिले. Uh, there is certainly, there is competition. Absolutely not a monopolistic market. ठीक है, competition है. Okay, everyone, I'll be very honest, everyone have their own points of differentiation. जहाँ पे वो भी जीतेंगे, हम भी जीतेंगे. Yes, there are some customers who have an emotional bonding. There are some customers who are bound to you by the virtue of the solution that you're offering. Yeah. So yes, there are some customers we are having from over 8 years, 10 years, and they are still with us. And there are some customers who were with some other competitors. They have moved to us. It's a normal market. इसमें ये नहीं है. If I just say that regionally भी बहुत सारे players होंगे, क्योंकि when you are doing complete India, there'll be players who will be regionally competing, and they'll be very strong in those places, in those pockets, because of the relationship they have, द लैंग्वेज है, वहाँ का कल्चर है, हर चीज से वो इन्फ्लुएंस तो होता है. सो दोज आर थिंग्स दैट डू इम्पैक्ट. बट यस, यू ऑल्सो हैव योर ओन सेल्स टीम फ्रॉम दैट रीजन who have to counter that. Their responsibility is to do that basically. तो यस, देयर विल बी कंपटीशन. हमारे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस इंडिया, अगर मैं कोई तीन बड़े प्लेयर कहूँ, ठीक है, दे वुड बी गोदरेज,
ओके, देन क्राफ्ट्समैन एंड नीलकमल, ये तीन बड़े प्लेयर हो गए। ठीक है, ये आपको अक्रॉस इंडिया मिलेंगे। हर एक के साथ आपको पता है कि कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी में हाउ यू नीड टू डू, and there will be some certainly some knowledge and skill set they would know how to counter me in those markets that. Yeah. So basically it's all about that. Apart from that, there is one domain that is with respect to bespoke manufacturing and high end customization. What happens is with the bigger names, they do not go in for customization as much as we would. So we take a lot of bespoke manufacturing and engineering, re-engineering to achieve that. That probably would be my USP that I deliver to customers. Okay, usko, he does not have to come to the shop. जैसे आप अभी आप अपने वैन यूजिंग के स्टोर में या एलपी के स्टोर में चले गए तो 42 का शर्ट ही लेना पड़ता है। फिर थोड़ा मेरा, आपको वीडियो में तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा पेट निकला हुआ है मेरे को, वहां पे टाइट होता है। ठीक है, तो फिर हमें क्या है 42 लेके कुछ ये करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे वो नहीं, आपका अगर पेट निकला हम आपके साइज का ही शर्ट बनवा देंगे। सो कस्टमर्स वहां पे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव टू मेक देमसेल्फ फिट टू द सॉल्यूशंस, दे कैन गेट अ सॉल्यूशन फिट फॉर देम। अंडरस्टूड। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझा आपने अफजल जी। अफजल जी, अभी एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी पूछा था। आप कस्टमाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, वो आपका यूएसपी है। तो मोटा मोटी सर हमारे पास कितने एसक्यूज होंगे? आई मीन आई जस्ट वांटेड टू नो दैट इन टर्म्स ऑफ एसक्यूज एक नंबर अगर आप हमको बता दे, दैट विल गिव अस एन आइडिया अबाउट द डाइवर्सिटी एंड द द प्रोडक्ट स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंपनी। See, there are more than 70 or more than 70 types of different products. Okay. Now, if I say those products, primarily, जैसे वो primary colors है ना, red, green and blue, तीन ही है, लेकिन उसमें जो है ना मिश्रण कर करके we can make a lot of things. ओके, ठीक है, समझ। So कहीं पे ज्यादा रेड है, कम ब्लू है, विद दैट यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सेकंड, विद एवरी कस्टमर एवरी प्रोडक्ट, जैसे जो सोल्यूशन मैं अपैरल दूंगा, जिसका शर्ट को स्टोर करना है, पैंट्स को स्टोर करना है, दैट विल बी अ डिफरेंट सोल्यूशन ऑल टुगेदर। द प्रोडक्ट क्लास में भी सेम, द प्रोडक्ट मे बी डिफरेंट। I will be selling it to an aerospace manufacturing में, they are doing some aluminum casting bodies, उसका अलग होगा। अपैरल में अलग होगा, जहाँ पे हम ऑयल में चले जाएंगे, ऑयल एंड गैस में, वहां पे प्रोडक्ट अलग होगा। सो products will be different, and then what happens is you create a union of multiple products based on the customer requirements. That is where you create different colors. हम ये कहते हैं ना, this is a rainbow business. कोई भी कस्टमर है ना, भले ही सेम डोमेन आएगा, बट यू कैन नेवर गिव द सेम प्रोडक्ट, सेम वेयरहाउस, सेम सॉल्यूशन टू एनीवन। मतलब हर दिन नया ठीक होता है ये बिजनेस में, आपको रिपीटेशन नहीं मिलता है। नहीं ठीक है, आई थिंक वेरी नाइसली आर्टिकुलेटेड अगेन अफजल जी। अफजल जी, अभी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। FY23 में हमारे लिए काफी अच्छा साल था। 83 करोड़ का टॉप लाइन, जो प्रीवियस ईयर 70 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आल्सो 48 लाख था। अभी आई वाज जस्ट सीइंग द करंट फाइनेंशियल ईयर FY24, यहाँ पे भी नंबर्स काफी अच्छे हैं। तो पहले बताइए कि सर FY24 में ऐसा क्या हुआ कि जिससे रेवेन्यू भी बढ़ गया, मार्जिन भी बढ़ गए? तो एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई द परफॉर्मेंस एक्चुअली गॉट अ बिग बूस्ट इन FY24? ऑफ कोर्स FY23 में भी ठीक ठाक था, लेकिन एब्सोल्यूट प्रॉफिट अगर हम देखें तो FY24 में काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। तो एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी? So see, there are multiple things. जैसे so जो प्रोजेक्ट हमारा ऑर्डर बुकिंग होता है ना, वन इज अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, मतलब आज आएगा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट क्वार्टर में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े आते हैं मिड टर्म जो एक साल लेते हैं, एंड लॉन्ग टर्म जो 2 साल तक प्रोजेक्ट चलते हैं, बिकॉज एवरी प्रोजेक्ट हैज इट्स ओन लाइफ टाइम। क्या होता है ना, देयर आर सम प्रोजेक्ट्स दैट वर टेकन इन कोविड एरा, which went for execution post that, and what had happened during that is steel prices had gone high, my raw material costs had gone very high. Okay, that एक रेजिडुअल एक इफेक्ट था जो आपके फ्यूचर ईयर में बताएगा। ऑल्दो द ऑर्डर बुकिंग वाज डन, and then when it was done, it was a good margin project, but आपका raw materials are not supported. Second, there was also a time when you wanted X, मेरा प्रोजेक्ट के लिए I wanted specific type of material, उसके लिए there was no availability, so I had to pay a premium to get that because I have to finish my order in time. So that was one. And second was with respect to our commissioning charges on the projects as well. Okay, what we have done is we have completely outsourced that division. So अभी मेरे लिए वो फिक्स चार्ज हो गया, अगर एक प्रोजेक्ट मेरा 100 रुपए लग रहा है तो 100 रुपए ही लगेगा।
इन अदर वेज क्या होता था ना, मेरा कॉस्ट कभी 120 150 चला जाता, कभी 80 में हो जाता था. Now we have moved that. So these are two primary reasons where we are able to do that. So basically that is the reason the margins have improved. तो थोड़ा कॉस्ट Yes. कटिंग, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो गया. ठीक है, समझ जी गया. जी. आगे चल के अफजल जी, अभी FY24 तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट without putting a number, Afzal ji, can we assume that margins will improve going forward in the next 2 years? Hopefully revenue बढ़ेगा, आपका volume of business बढ़ता है. So can we assume margins to improve from these levels? Because I was seeing your EBITDA margins now for the latest October तक जो आपने दिखाया वो करीबन 12.5% है. तो previous year Yes. के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है. Can we assume that these will be sustained or will improve going forward? And secondly, sir, हमारा as on date order book कितना होगा? So 100% EBITDA and PAT will improve from here on. Certainly, we are also committed to improving this. Okay, uh, a lot of efforts and lot of cost optimizations are happening to ensure we do that. Okay, Okay. and closing this year, you will see that जो हमने stub period में फाइल किया था, we will be honoring that and we will continue to do that and only get better from there on. Okay. Okay. Okay, one that is certain commitment from us. And आपने second पूछा था, I I was lost, sorry. asking you what is the present order book, which is, stated order book Order. कितना है? So I have hard orders of approximately 21 crores on hand, and soft orders in the sense verbal commitment, mail commitment, etc. That's approximately 9 crores. Okay, fine. Understood. Now we come to the most important question, Afzalji, on the public issue offering. If you could tell us Yes. in brief, what is the objective of this fund offer from the company, and what is the kind of money the company plans to raise? If you could tell us, some inputs on this. So uh, uh, what we want to do, Avinash ji, in this is we want to raise approximately around 30 to 30 plus or minus few crores, okay, is what we want to raise from the market. And the utilization of funds is primarily towards our working capital needs. Okay, we have the machines, we have the infrastructure to do a lot of manufacturing. We are not right now at 100% utilization of plant. Okay, we are running one shift perfectly and second shift on and off. Okay, Okay. we can take the plant up to 3 shifts. So for me, in terms of infrastructure, there is no stopping. But for me to be able to execute the orders and grow at a consistent rate, okay, we require working capital. Okay. So the complete amount is going to be used for working capital. Okay. No, understood. Afzalji, now since you mentioned about working capital, very broadly, right from the time we get the order from the customer and we execute it, for the client, whether it is a short-term project or a long-term project, normally हमारे business में working capital cycle कितना लंबा होता है? How many months does the customer pay us? Simply. So I will say it from procurement to execution and payoff. Okay, make average cycle कहूँ तो 90 से 100 दिन का cycle आता है. Okay. So basically 100 odd days में आपका working capital cycle. तो वो हमको साइकिल, ओके, विथ बेटर if I am having working capital and every etc and I am able to do that, okay, I want to reduce that to a 70-80 cycle. That means get Okay. one more, एक Exactly. और मिल जाए आपको, बिल्कुल. ठीक है, 3 की जगह पे आपको 4 मिल जाए. That is what we have, our goal also is. Okay, so understood. Just one more thing which I want to add, Afzalji, in your conversation, you said that you're operating at a lower utilization, so you can actually produce more from your same setup. तो ये कि मान के चलो कि ऑपरेटिंग लिवरेज भी थोड़ा बहुत प्ले आउट होगा. ऑब्वियसली अगर आपका ज्यादा रेवेन्यू आता है तो वो ऑपरेटिंग लिवरेज का भी बेनिफिट हमको मिलना चाहिए आने वाले 2 साल में. सो माय Yes. थिंकिंग राइट, करेक्ट? Yeah. That's why I said you 100% EBITDA and PAT is going to increase. Nice to know that. Now we come to the last question, Afzalji. Typically, Yes. see, you all have been in this business for a long time. I mean, COVID was, of course, an event which affected every company, every business. But sir, हमारे धंधे में सबसे बड़ा risk क्या है? In this business, apart from basically the execution kind of time frame, the raw material prices which you said, also go up, come down. तो इसके अलावा सर हमारे धंधे में सबसे बड़ा risk क्या है और हमने ये risk को कैसे manage किया है? If you could share your thoughts. See, there is for us right now, if I say you, okay, steel raw material, okay, which is contributing to 65 to 70% of the COG. It's contributing to 65% of my revenue.
Yeah. Okay, that is the biggest risk. There is no risk even closely Correct. equivalent to that. Exactly. So availability of skill, Hindustan mein, there is lot of steel manufacturers. Okay, but if they have the steel prices go up and down, that makes the maximum or the biggest impact to us. When the steel prices are sustaining, that's the best time for us. We are able to predict orders and we can book orders correctly. When the steel prices, like कोविड के बाद का जो वक्त था, जो एक साल के बाद जो आपके अपने सेकंड कोविड के वक्त में जो स्टील प्राइस बढ़ा था, ठीक है, उसमें स्टील प्राइस का अवेलेबिलिटी वाज अ चैलेंज, क्योंकि थोड़े प्लांट्स ने मेंटेनेंस ले लिया था, थोड़े जो अवेलेबल था पीपल वर होल्डिंग ऑन टू इट एंड नॉट सेलिंग इट। Yeah. और मार्केट में यही होता है ना, आपके पास मेटेड है, कल आपको पता है कि आपको बस एक दिन रखने से कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा, तो आप सर्टेनली रखेंगे, बेचेंगे नहीं। And I think So those were the things that is the biggest risk taking risk in our business is the RM steel. आई थिंक अंडरस्टूड। अफजल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बहुत अच्छी तरह से आपने हमको समझाया। वी कुड अंडरस्टैंड योर कंपनीज ऑपरेशंस इन अ मच बेटर वे। प्लीज एक्सटेंड माय बेस्ट विशेस टू यू, योर एंटायर मैनेजमेंट टीम, और सर आपके पब्लिक इशू के लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू आपके कि आप इतना हमारे लिए टाइम निकाल के ये इंटरव्यू किए, एंड थैंक यू फॉर ऑल द क्वेश्चंस, एंड वी ओनली विश योर व्यूअर्स विल लाइक दिस शो एंड दे विल बी वेरी हैप्पी विद दिस another episode that will go online. Yeah, Okay, थैंक यू। thank you so much. थैंक यू।